Students, today we'll take a quick reading of your next poem, which is One Art. This has been written by Elizabeth Bishop. This poem is about the art of losing things. So, at the first reading, it might appear that the tone of the poet is not serious, but with a deeper understanding, we get to know that in fact it deals with a worldly wisdom and great, moral advice in itself. Because the poetess is of the firm view that the art of losing is not difficult to master. At the outset, she might appear to mention the loss of normal and ordinary things like losing the door keys, losing watches, and and then she moves to things of greatest importance when she tells that she lost possessions that belonged to her mother or relatives, and that she lost friends, or even she mentioned losing continents and houses. So it mentions that she gradually enhances her scope and zooms out from losing minor things to the greater things in her that carried importance in her life. But the actual viewpoint in mentioning all the losses and the sacrifices she's given in her life is that it is really not difficult to master the art of losing. So let us start reading the poem. The art of losing isn't hard to master. ये जो खोने का आर्ट है इसको मास्टर करना, इसको कंट्रोल करना, इस पे काबू पाना मुश्किल नहीं है, ये एक हुनर है. So many things seem filled with the intent to be lost that their loss is no disaster. So बहुत सारी चीज़ें filled with the intent, उन्हें देखकर ऐसा लगता है to be lost that their loss is no disaster, कि अगर वो गुम हो जाए तो हमें बड़ा दुख होगा, हम उसके बगैर रह नहीं पाएंगे. लेकिन असल बात ये है कि अगर वो गुम हो भी जाती हैं तो देयर लॉस इज़ नो डिज़ास्टर, कि उनका जो लॉस है वो हमारी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं करेगा. थिंग्स आर लॉस्ट इन रूटीन, बट वी शुडंट टेक देयर लॉस टू आवर हार्ट्स, बिकॉज दिस कैन नॉट बी अ डिज़ास्टर इफ वी फर्मली रियलाइज दैट द थिंग्स हैव द टेंडेंसी टू बी द लॉस्ट. अब यही वो जो स्पिरिट है, इससे क्या होगा, विल बिकम indifferent to our greed for the materialistic things, and we can muster up our courage to bear the losses. Then she says, lose something every day, except the fluster of lost door keys, the hour badly spent. The art of losing isn't hard to master. अब ये जो लाइन है ये रिपीट हो रही है, द आर्ट ऑफ लूजिंग इजंट हैड टू मास्टर, दिस इज़ द रिफ्रेन. इसको यहाँ पे लाने का पर्पस बार बार रिमाइंड कराना कि पोइटिस का एक्चुअली व्यू पॉइंट क्या है. नाउ रिमेंबर, आप पोइट लिखे या पोइटिस लिखे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप पोइट भी लिखते हैं दिस इज़ फाइन. सो लूज समथिंग एवरी डे. व्हाट शी सजेस्ट्स कॉमन पीपल दैट दे शुड ट्राई टू लूज थिंग्स. अब चीज़ें आप क्यों घुमाएं, चीज़ें आप जैसे गुम करेंगे वैसे ही आपके अंदर हौसला बढ़ेगा. एक्सेप्ट द फ्लस्टर. फ्लस्टर यानी परेशानी. जो चीज़ गुम होगी उसकी जो परेशानी आएगी उसको एक्सेप्ट करें. अब लॉस्ट डोर कीज़, अगर घर की चाबियाँ गुम हो गई, द आवर बैडली स्पेंट, या आपका कोई वक्त जो बहुत बुरा गुजरा, वी मस्ट नॉट लेट इट ओवरकम आवर ऑल द पैशंस एंड इमोशंस. लेकिन इन चीज़ों को हमारे जज्बात पे गालिब नहीं आना चाहिए. That simply it means that we must accept or face the fluster of the lost door keys courageously and boldly. And if we repeatedly, master the art of losing, eventually we will get to know that the art of losing is not that hard to control and is not that difficult to master. What we need to do is to just develop the habit of accepting and tolerating. Next she says, then practice losing further, losing faster, places and names and where it was you went to travel. None of these will bring disaster. उसके बाद वो अपना स्कोप आगे बढ़ाती जाती है कि आपने मज़ीद क्या लूज़ करना है. फिर आप ये कोशिश करें कि आपने लूजिंग फर्दर और ज़्यादा चीज़ें गुम करने की कोशिश करें. लूजिंग फास्टर, उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दें, ज़्यादा तेज़ी से गुम करें.
प्लेसेस भी, उनके नाम भी, जहाँ पे आप कभी गए हैं, सब चीज़ों को भुलाने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें। होगा क्या, ग्रेजुअली आपको पता चल जाएगा कि इफ़ देयर इज़ अ लॉस ऑफ एन एम्पायर और अ प्लेस और इवन यू फॉरगेट इट्स नेम, इट विल नॉट कॉज एनी सीरियस डिजास्टर इफ़ यू फेस द लॉस विद अ स्माइलिंग फेस। सो अक्सर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम कुछ चीज़ों को भूल जाएंगे तो शायद उनके बिना रह नहीं पाएंगे। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट पॉइंट दैट द पोइट एक्चुअली वांट्स टू मेक, कि अगर हम खोने की आदत डालें और ख़ुद में बर्दाश्त पैदा करें तो फिर चीज़ों का नुकसान हमारा जहनी सुकून बर्बाद नहीं करेगा। देन I lost my mother's watch and look, my last or next to last of 3 loved houses went. The art of losing isn't hard to master. अब बात ये है कि जब वो बाकी सबको एडवाइस कर रही है तो वो फिर अपनी पर्सनल एग्जाम्पल भी वहाँ पे बताएगी। तो what she states about her life that I lost my mother's watch, कि मैंने अपनी माँ की वॉच गुम कर दी। अब माँ की वॉच है सो डेफिनेटली शी हैज़ सर्टन एफिलिएशन विद इट। एंड लुक, और ज़रा देखो, माई लास्ट और नेक्स्ट टू लास्ट और 3 लव्ड हाउसेज वेंट, मेरे 3 बहुत प्यारे घर भी, वो भी मुझसे खो गए। बट शी वॉज नॉट वरीड अबाउट इट एट ऑल। She had to leave all those 3 houses that were very dear to her, but she didn't take that loss to her heart. उसने दिल पे नहीं लगाया. Again we see that she repeats that the art of losing is not difficult to master. Anyone can easily master it if we just develop the habit of accepting and tolerating things with a smiling face. Then she says, I lost 2 cities, lovely ones, and vaster. Some realms I owned, 2 rivers, a continent. I miss them, but it wasn't a disaster. उसके बाद आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे उसकी जो डेमोग्राफिकल लोकेशंस हैं वो एक्सपैंड हो रही हैं। पर्सनल लॉसेस से वो एक ग्रैंडर जो लॉस है उनकी तरफ जा रही है। आई लॉस्ट 2 cities, मेरे 2 बड़े शहर, लवली वंस, जो मुझे बहुत प्यारे थे। एक पर्सनल नोट भी आ रहा है उसकी राइटिंग में। एंड वास्टर, और बहुत बड़े बड़े। सम रियाम्स आई ओन्ड, कुछ रियासतें, कुछ सल्तनतें जो मेरी थी। 2 रिवर्स, मेरे 2 दरिया थे। अ कॉन्टिनेंट, मेरा एक पूरा बर्रे आज़म था। आई मिस देम, मुझे वो याद तो आते हैं, बट इट वॉजंट अ डिज़ास्टर। लेकिन उनको खोना, उनसे दूर जाना भी मेरे लिए कोई डिज़ास्टर नहीं था, मेरे लिए कोई तबाही नहीं थी। दैट मीन्स कि इतनी तमाम चीज़ें खोने के बाद भी उसने जिस तरीके से अपनी करेज को, अपनी स्पिरिट को अपराइट रखा है, it has brought a certain defiance in her character. Then she says, even losing you, the joking voice, a gesture I love, I shan't have lied, it's evident. अब जैसे as if she is talking to her loved one, as if she is talking to her beloved, कि अगर मैं तुम्हें भी खो दूँ, now this is the joking voice, ठीक है, a gesture I love, यानी उसकी जो आवाज़ है, उसका जो अंदाज़ है कि जिससे शी इज़ डीपली, शी इज़ इनग्रॉस्ड इन लव विद इट। आई शैंट हैव लाइड, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं उसको भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। इट्स एविडेंट, क्योंकि क्लियर क्या है, द आर्ट ऑफ लूजिंग इज़ंट हार्ड टू मास्टर, क्योंकि खोने का आर्ट, उस पर काबू पाना, उसको कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है। दो इट मे लुक लाइक डिज़ास्टर, हो सकता है देखने में लगे लाइक डिज़ास्टर, ऐसा ही लगे कि ये डिज़ास्टर है, लेकिन अगर आप अपने किसी लव्ड वंस को, आप अपने बिलोंगिंग को, आप अपनी लैंड्स को और आप अपनी पर्सनल कोई भी चीज़ उसको लूज़ करते हैं, तो फिर भी आप उसके लॉस को बर्दाश्त कर सकते हैं। और इन फैक्ट यही वो एबिलिटी है लॉसेस को बर्दाश्त करने की जो आपको आगे चलने का हौसला देती है। वरना आवर लाइफ वुड बी एट स्टैंड स्टिल, फिर तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। बट ज़िंदगी नाम है आगे चलने का, रवां दवां होने का। सो आर्ट ऑफ लूजिंग इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू ओवरकम. So here the hidden lesson for us is that we shouldn't become sad and unhappy even at the loss of our dearest persons, because life has to move on a positive note. Alright, now let us discuss the important points with us. Good day.